डियर आईएमसी दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भले ही लॉकडाउन अनलॉक हो चुका है, लेकिन अभी भी बाहर का खाना सुरक्षित नहीं है। इसलिए बाहर जाने के बजाय घर में रेसिपी का आनंद लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि घर पर की गई कुकिंग सेहतमंद है और सुरक्षित भी। तो दोस्तों, आज मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त रूही एक और आसान और बहुत ही कम खर्चे में बनने वाली रेसिपी के बारे में आपको बताने वाली हूँ, जिसका नाम है मोमोज। तो चलिए जानते हैं अब रेसिपी में यूज होने वाले इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो दोस्तों, मोमोज बनाने के लिए हमें चाहिए पत्ता गोभी, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, सोया सॉस, आईएमसी टोमेटो केचप, शेजवान सॉस, नमक, मैदा और फ्राई करने के लिए आईएमसी राइसिन राइस ब्रान ऑयल। तो अब मूव करते हैं वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन की ओर और जानते हैं इसकी फॉर्मेशन का तरीका। Hello everyone, today we are going to make momos at home with some ingredients that are available with us, and especially with some products of IMC, that is tomato ketchup and IMC turmeric powder. Now we have chopped onion into fine pieces and we are frying it till it turns brown. And now we'll add chili in that and garlic cloves so that it will get roast. Now this is a paste of onion, chili and garlic. Now we are going to put cabbage into this. Now we are putting some soya sauce in this. And now we'll put some IMC tomato ketchup in this mixture. You can see this bottle. It will make the momos taste even better. Now I am going to put 2 spoons of Szechuan chutney in this mixture. You can also add carrot if you want, but we are not preferring it because of many of us don't like it. So sauces and ketchups are preferred. So you can put that into this mixture. As you can see, this is how the mixture turns after the combination of all the tomato ketchup, soya sauce, Szechuan chutney, onion, garlic, chili and cabbage. This is how it looks, and we'll set this for 10 minutes to get it cold. And now we'll be preparing for our momos cover so that this filling can be added into that. Don't forget to add salt according to your taste and the quantity of mixture you take. This is how fluffy the maida should be. Now we can take small balls of maida and then convert it into chapati like this. And now we are going to fill some filling into this. Now first you have to wet these corners with some water and then fill it with the filling. Make sure that you place it into the center so that it don't fall off. Now start making it like this. We call it as leaf momos because when it's done, it looks like a leaf. Have some patience while doing this. Now make it like this. Take sections from both the sides and twist it like it from the behind so that it gets stiff. Now make sure when it comes to the end, just pinch it like this and close it. Now this is how it looks, a leaf momo. And we have already made the 2 momos and this is the 3rd one. Now we are frying this momo and this is how it will look after getting fried. Let that momo turn a little brownish so that it is well of eating. Our momos are ready. You can see it.
यकीन मानिए, अगर आप पहली बार IMC मसालों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इनका स्वाद कहीं और नहीं मिल सकता सिवाय IMC के। तो अगर आपने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया तो आज ही कीजिए इस रेसिपी को भी और IMC मसालों को भी, और अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। मैं मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में IMC रसोई की एक और नई रेसिपी को लेकर। तब तक आप इसे ट्राई करिए, घर में ही इस पकवान का आनंद उठाइए और सुरक्षित रहिए। गुड IMC।